Good morning, everyone, and a very warm welcome. I extend all my good wishes and greetings to you all. Today, we'll be working out with the poem The Road Not Taken. Let us first talk about decision and choice. Decision जहाँ हम कुछ निर्णय लेते हैं, whereas choice, the right power or opportunity to choose. It is more a mindset approach. चॉइस जो है वो हमारे पास एक तरह से विकल्प है कि हम ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, और डिसीजन जो है वो एक्चुअल में वो स्टेप है जो हम ले लेते हैं किसी भी चॉइस को या किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट जब हम करते हैं. Now just look at the picture. It says your life, your choice. It means that आपका जीवन है और आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस. जबकि हम इसको उलट करके देखें अगर, so it says your choice, your life. Means जैसा आप चूज करोगे आपकी लाइफ वैसी बन जाएगी. Life is full of choices. हर जगह पर हमें कुछ ना कुछ डिसाइड करना होता है, ऑप्शंस होती हैं, हमारे सामने विकल्प होते हैं. देन वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा हमारे लिए सही है. एंड द डिसीजन दैट वी टेक डेफिनेटली हैज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ. सो वी नीड टू चूज वेरी वाइजली. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग एनीथिंग इन आवर लाइफ्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको एक विकल्प आ जाएगा आपके सामने कि आप कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हैं. आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप साइंस में भी आपके पास फर्दर 2 ऑप्शंस आ जाएंगे. आप मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं. तो इस तरह से आप कॉमर्स है आपके पास. सो यू हैव गॉट नंबर ऑफ चॉइसेस. अब आपको उन चॉइसेस में से कौन सा विकल्प लेना है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डिसाइड. आपको वो निर्णय लेना होगा, आपको चुनना होगा, और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा. उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में देखने को ज़रूर मिलते हैं. नाउ लेट्स स्विच टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन. इट्स अ पोम अबाउट द चॉइसेस फेस्ड इन लाइफ. टू इलस्ट्रेट दीज चॉइसेस, Frost uses metaphor of a forked path in a wood. One way is well trodden and the other is fresh with grass. The first symbolizes a safe, easy choice, which others often take. And the second one, the Frost chooses, is more risky and unknown. And Frost regrets that he could not travel both. But just as life's decisions are irreversible, the path he chooses leads on to further paths. While walking in a jungle, Frost finds himself जहाँ पर रोड जो है वो 2 दिशाओं में बंट गई. He uses a metaphor of a forked path. Metaphor आप सभी को पता है, it's a figure of speech that makes a comparison between 2 unlike things. So जैसे कि मेरा बेटा शेर है, तो आपका बेटा का कंपैरिजन आपने किससे कर दिया? शेर से कर दिया. ये नहीं कहा शेर की तरह है, ऐसा नहीं. शेर है, ये मेटाफर है. लेकिन अगर मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा तो वो सिमिली है, दैट इज अनदर फिगर ऑफ स्पीच. एनीवे, तो यहाँ पर भी फ्रॉस्ट ने कंपैरिजन किया है, और वुड में यानी जंगल में जो 2 रास्ते उन्हें या 2 दिशाओं में बटा हुआ जो रास्ता मिला, उसे उन्होंने फोक्ड पाथ कहा. एक जो था वो वेल ट्रॉडन था, दैट मीन्स वो बहुत इजी था. वेल ट्रॉडन मीन्स कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग पहले से ही चले हुए थे. और दूसरा जो था वो इट वांटेड वेयर का मतलब हुआ कि उसे इस्तेमाल नहीं किया गया था. सो इट इज दैट where he needs to take the decision whether to go the well trodden one or to take the easy one. Frost chooses the second road, which was more risky and unknown. और उनको इस बात का मलाल रह जाता है कि वो दोनों पे ट्रेवल नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज एक रास्ता जो उन्होंने चूज किया है वो आगे चलकर उन्हें और विकल्प देगा, और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक एंड टेक द पाथ विच ही लेफ्ट. काश वाली ये जो फीलिंग होती है ना,
काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता, काश ऐसा ना हुआ होता। ये सारा हम बाद में सोचते हैं जब हम डिसीजंस जो है प्रॉपरली नहीं लेते हैं। तो आई डोंट वांट कि आप भी कभी लाइफ में ऐसे रिग्रेट करो, काश ऐसा हुआ होता। तो आप जो भी डिसीजंस लें वो बहुत वाइजली लें और बिल्कुल ध्यान में रखें कि इन डिसीजंस की वजह से हमारी लाइफ बनती है या बिगड़ती है। Now let's discuss some short questions and answers. The first one is, what was the poet's dilemma? The poet was standing before the two roads. He had to decide which one would lead him to success. And it was not easy for him to decide. So he stood there and introspected. Out of the two options, he had to choose one. And of course, it was not at all easy for him to choose which way to go. So the poet was in dilemma. He was in fix. वो दुविधा में थे कि कौन से रास्ते को वो choose करें. Second is, what was the poet's opinion about both the roads? The poet opined that both the roads were same. They were equally traveled and there was no difference between them. So he got confused. It was difficult to decide which road would be more convenient and comfortable. He wanted to choose the one that would take him to his intended destination. What do the roads represent? The roads represent the problem of decision making. Human beings suffer because of their choices and decisions. They find themselves in such situations at every step in their lives. Out of the available options, they have to choose the one that may take them to their destination. The choice decides the outcome in life. इसलिए जब भी choose करें, बहुत wisely choose करें. Did the poet take his decision haphazardly? No, the poet did not take his decision haphazardly. He speculated and brooded over the situation. बहुत सोच विचार करके उन्होंने निर्णय लिया. No doubt he was a bit confused. After all, it was not quite easy to make the right choice, but he exercised his option after much contemplation. Why did the poet choose that road? The poet chose that road because it was less traveled. He wanted to do those activities which had not been done by anyone earlier. The poet didn't seem to be interested in choosing a much trodden path of life. Avoiding a popular rat race, he opted for the option that broke fresh grounds. What is the message of the poem? The message of the poem is to make people aware of their analytical skills. विश्लेषण करना आना चाहिए. The poet wishes to say that choices should be made carefully and thoughtfully. One should behave responsibly because life does not offer multiple chances every now and then. जब भी जो भी निर्णय लें, सोच समझ के उसका पूरा विश्लेषण करके लें, because life will not give you the second chance. How does the outcome of our life depends on the choice we make to reach our destinations? See, life is full of complexities. It's not easy. It provides us with different choices and options. The choice is never easy. Our success or failure completely depends on the choice that we make. Mostly, people choose the most popular or frequented paths of life. But some bold and adventurous people, they take risks and choose the less frequented paths and ways of life. And the kind of choice that we make affects our life and it destines our lives. Students, let's discuss one value-based question. How does bad decision affect one's life? कि कोई एक गलत आप डिसीजन ले लेते हैं तो उसका आपकी लाइफ पे कैसे वो आपकी लाइफ को प्रभावित करती है. हाउ डज इट अफेक्ट योर लाइफ? लाइफ provides many ways.
options and alternatives, जैसा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं. Pluralities of options confuse us. इतनी सारी हमारे पास options होती हैं, वो हमें confuse भी कर देती हैं. The outcome of life depends on the ways or path of life that we choose. Life हमारी जो भी है वो किस चीज़ का आउटकम है? वो आउटकम है जो डिसीजंस हमने लिए या जो पाथ्स जो हैं हमने वो चूज किए, उसका एक आउटकम है. सो वी शुड ऑलवेज मेक द राइट और जुडिशियस चॉइस. अ रॉन्ग चॉइस makes all the difference in life. It leads to unpleasant results and disastrous consequences. एक गलत निर्णय अगर हम ले लेते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारी लाइफ में होते हैं. Bad decision affects one's life badly. Actually, our success depends on the decision which we take at present. If our decision is wrong, we have to repent for it because it ruins the countless happy moments of our life. Our failure creates disappointment and we forget the essence of life. बिल्कुल भी हम जीवन क्या है उसका महत्व ही बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं या भूल जाते हैं या उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं अगर किन्हीं कारणवश हमें जो है लाइफ से अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मिले या हम कहीं फेलियर साबित हो. तो किसकी वजह से? एक बैड डिसीजन की वजह से. तो वहाँ पर हमारे लिए लाइफ का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. वी कम्प्लीटली ruin our lives because of one bad decision. So in a sense, it can be said that one bad decision spoils our lives. Let us discuss some of the questions from the text. Where does the traveler find himself and what problem does he face? कि traveler जो हैं, जो कि poet हैं, वो कहाँ खुद को पाते हैं और उनको क्या problem महसूस होती है. The traveler finds himself at a point where two roads diverge. His problem is to decide on which road he should walk. विकल्प आ गए हैं दो, उनमें से कौन सा चूज करना है, इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से जाऊं, ये उनके लिए एक डिलेमा की सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है. सेकंड क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजेस. So first one is a yellow wood. A yellow wood means a forest in the autumn season. Second is it was grassy and wanted wear. It means that the road was grassy because it was less traveled road. It wanted people to move on it. The third phrase is the passing there. The passing there implies walking on the road. Next is leaves no step had trodden black. It means the leaves had not been crushed under the feet of the travelers as that road was not taken by anybody else. How way leads on to way. It simply means कि कैसे एक रास्ते जो है वो दूसरे रास्ते को और उससे आगे एक और विकल्प आगे से आगे. How one road leads to another. Let's discuss one more. Is there any difference between the two roads as the poet describes them? In stanza 2 and 3 and then in the last two lines of the poem. Is there any difference between the two roads? तो पहले बात कर लेते हैं stanzas 2 and 3 की. There is no difference between the two roads in stanza 2 and 3. लेकिन in the last two lines of the poem, the poet tells that the road he opted for is less traveled. शुरू में सेम उनको लग रहे हैं लेकिन लास्ट की जो लाइंस हैं पोम की उसमें वो बताते हैं कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं जो कि कम इस्तेमाल किया गया है. Now let's discuss the another question. What do you think the last two lines of the poem means? The last two lines have the quintessence of the poem. मतलब वो पोम का मर्म है वहाँ पे. The poet expresses his opinion that it becomes difficult
for a normal human being to change his or her decision. The poet intends to walk on the first road, but he couldn't do so because life does not offer multiple chances to choose. वापस आना चाहते हैं, सोचते हैं कि कभी वो पहला रोड जो उन्होंने नहीं लिया, क्या वो उसको दोबारा आके उस ऑप्शन को चूज कर सकेंगे? नहीं। रीजन कि एक रास्ता जो है वो फर्दर आगे और ऑप्शंस आपके लिए खोल देता है. द डिसीजन टेकन मे मार one's future or lead one to success. It makes all the differences. He now repents for not getting a chance to travel on the first road. The question is that, have you ever had to make difficult choice? Or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice and for what reasons you will make that choice? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कभी आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ा है, ऑप्शंस में से चूज करना पड़ा है, और अगर नहीं करना पड़ा है तो क्या आपको लगता है कि आपको आगे शायद ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आए, और फिर जब आप जो डिसीजन लेंगे या जो भी आप चूज करेंगे वो किन कारणों से आप वो निर्णय लेंगे. ये जो लाइफ है, such situations लाइफ में आती रहती हैं where we need to choose, where we need to pick, where we need to decide. And in today's world people have numerous alternatives. आप सपोज अगर आपको सेल फोन ही लेना है तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इतने सारे ब्रांड्स को कंसल्ट करेंगे, फिर प्राइस देखेंगे, फिर फीचर्स देखेंगे, और इन सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप कोई डिसीजन लेंगे कि ओके आई एम गोना बाय दिस कंपनीज सेल फोन. तो लाइफ में ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको कोई भी डिसीजन लेना है वो बहुत ज़्यादा कंसीडर करके लेना है, उसके ऑल इन्स एंड आउट्स को वर्कआउट करना है, एंड यू हैव टू रुमिनेट ओवर द डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि आप उसकी एडवांटेजेस को ही देखें, आप ये भी देखें कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? कभी रिग्रेट होता है कि उफ काश ये नहीं किया होता, काश वो डिसाइड किया होता? तो वन शुड जो है वो लिव इन प्रेजेंट एंड नॉट इन द पास्ट. हम सबको जो है ना प्रेजेंट को महत्व देना चाहिए, पास्ट से हमें सीखना चाहिए. द फिलॉसफी ऑफ इज, यानी है कि जो फिलॉसफी है, इज द की टू अटेनिंग सक्सेस. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. उतना इजी लाइफ जो है वो आसान नहीं है. इट्स फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत जटिल है. सो इट्स हर्डल्स आर टू बी क्रॉस्ड ब्रेवली. जितनी भी हमें रुकावटें आती हैं उनको बहुत ब्रेवली हमें पार करना होता है. वन मस्ट नॉट फील नर्वस एंड गेट डिजेक्टेड इन द ट्राइंग सर्कमस्टांसेस. जो भी सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां हमें ट्राई करती हैं, हमें उनसे पार होना होता है. कैसे पार हो सकते हैं? वाइज डिसीजंस लेके, गुड डिसीजंस लेकर के. ऑन सम इंस्टांसेस वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट about the choice he or she makes. So these were some of the questions from the poem The Road Not Taken. I hope you understood them and definitely you'll get good marks in your exams. और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स सिर्फ आपको एग्जाम्स में ही सक्सेस नहीं दिलाएंगे, बट जीवन जो नित नए रोज हर वक्त एवरी नाउ एंड देन हमारी परीक्षा लेता रहता है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा खरे उतरेंगे. यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. विल मीट नेक्स्ट in the coming videos. Till then, goodbye, take care.